Jaiswal, tutor in Index Nursing College. Today my topic presentation in GERD gastroesophageal reflexes disease. हम इसके पहले ओवरव्यू देखेंगे क्या क्या है. हम इसमें पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ GERD, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस टेस्ट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. इसोफेगस, म्यूकस लाइन, muscular tube that adheres food from the mouth to stomach, being at the edge of pharynx and about 4 cm below the diaphragm. Its ability to transport food and fluid is facilitated by the upper esophageal sphincters and the lower esophageal sphincters. There is no serosal layer of the esophagus. GERD होता क्या है? Some degree of esophageal reflexes, backflow of gastric and duodenal contents into the esophagus in normal is both adults and children. GERD is the excessive reflexal, a digestive disease in which stomach acid or biles irritate the food pipe lining. It is a chronic disease that occurs when stomach acid or bile flows into the food pipe and irritates the lining. Acid reflux and heartburn more twist a weak and indicate GERD. GERD, ठीक है. इसका GERD caused by frequently acid reflux and reflux of non-retic content from the stomach when you swallow, and circular band of muscles around the bottom of esophagus, lower esophageal sphincter relax to allow food and liquid to flow into the stomachs. ठीक है. 3 symptoms of GERD होते हैं: nausea, bad breath, trouble breathing, hard time swallowing, vomiting, warning away of animal, a lump of the थ्रोट. ठीक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ GERD. नॉर्मली लोअर इसोफेगल स्पिंचर्स क्रिएट्स इनफ प्रेशर अराउंड द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस टू क्लोज इट सो गैस्ट्रिक कंटेंट डोंट बैक टू इनटू द इसोफेगस. रिफ्लेक्स अकर व्हेन LES pressure is deficient or the pressure of the stomach exceeds LES pressure. When this happens, the LSE relaxes. Pathophysiology. Common cause: incompetent lower esophageal sphincters, pyloric stenosis, motility disorder. Pathophysiology. The acidity of gastric content and amount of the time in contact with esophageal mucosa are related to the degree of mucosal damage. Esophageal ulcer and esophagitis may result. Gastrophageal reflexes disease is a chronic gastrointestinal disorder characterized by the of gastric content into the esophagus. It is one of the most commonly diagnosed digestive disorder in the US, with a prevalence of 20%, resulting in a significant economic burden, indirect and indirect cost, and adversely affect the quality of life. GERD is caused by multiple different mechanisms that can be intrinsic, structural, or both, leading to the distribution of the esophageal junction barrier, resulting in exposure of the esophagus to acidity. Gastric contents clinically typically manifests with symptoms of heartburn and regulations. It can also presented in typical patients with extra esophageal symptoms such as chest pain, dental erosis, chronic cough, laryngitis of asthma based on endoscopy, and histopathogenic appearance. GERD is classified into the 3 different non-erosive reflex disease: erosive esophagitis and esophagus. NERD is the most prevalent, seen in 60 to 70% of patients, followed by erosive esophagitis, and B is in 30%, and 6 to 12% of patients with GERD. Over the years, to maintain in the management of GERD has been lifestyle modification and proton pump inhibitors. However, medically refractory GERD is become increasingly common, required to approach in the management of GERD. हम इसकी पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी यहाँ तक मैंने आपको बता दी. तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ GERD इज अ मल्टीफैक्टरियल एंड इज एक्सप्लेन बाय वेरियस मैकेनिज्म इन्वॉल्व, including the influence of the tone of the lower esophagus sphincters, are the presence of hiatal hernia, esophageal mucosal difference, against the reflex and esophageal motilities. Impaired lower esophageal sphincters function and
Transit lower esophageal sphincter relaxations. The LES is a 3 to 4 centimeter tonically contract smooth muscle segments located at the esophageal junction and along with the circular diaphragms form the physiological ECG barriers which prevents the retrograde migrations of acidic gastric contents into the esophagus to otherwise healthy individuals maintain a high pressure zone above gastric pressure with transient relaxation of the LES that occurs physiologically in response to a meal facilitating the passage of food into the stomach. Patient with symptoms of GERD may have frequent transient relaxations on triggered by swallowing, resulting in exceeding the gastric pressure more than LES pressure, permitting reflux of gastric content into the esophagus. The mechanism of increased transient relaxation of announced but account of 48 to 73% of GERD symptoms. The LES tone and are influenced by factors such as alcohol use, smoking, coffee, pregnancy, certain medications like nitrates and calcium channel blockers. Hiatal hernia is a frequently associated GERD and exists independently without causing any symptoms. Non-thelsis is the presence of hiatal hernia plays vital role in pathogenesis of GERD in a LES functions reported than patient with prior GERD with or without a small hiatal hernia and similar LES function and abnormalities and acid clearance. However, patients with large hiatal hernia were noted of shorter and weakness resulting in increased reflex episodes. It was also pointed on the degree of esophagitis of bones patient with large hiatal hernia. ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी हम पढ़ेंगे. The esophageal serve to function as a protective defense barrier against the retarget migration of reflexes. Distribution of this epithelial common phenomenon in GERD is NERD. The histopathological features of GERD are not unique to this condition due to minimal biopsy criteria for diagnosis and varying sensitivity and specify in the diagnosis. In fact, the histopathological diagnosis of GERD is made based on an array of microscopic findings that include features inflammation, basal cells, hyperplasia, papilla, elongations and dilatations and intracellular space. अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम पढ़ेंगे पायरोसिस. पायरोसिस क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन इन द इसोफेगस. अ टेक्निकल टर्म फॉर विच इज पॉपुलरली कॉल्ड it burn a burning sensation in the upper abdomen in many. There is a technical term such as pyrosis and popular term is the same phenomenon. ठीक है. Heartburn, also known as pyrosis, cardiolgia or acid indications a burning sensation in the central chest or upper central abdomen. Heartburn is usually due to regurgitations of gastric acid into the esophagus. Is the major symptoms of gastroesophageal reflux disease. नेक्स्ट है हमारा डिस्फेजिया. तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है. What is dyspepsia? Upper abdominal discomfort described as burning sensation, bloating and gasiness, nausea or feeling full too quickly after starting to eat. Indications can have caused that due to underlying disease. Examples include eating too much, drinking too much food, intolerance of taking piles and empty of stomach. ठीक है. सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? पैन और बर्निंग इन द स्टमक, ब्लोटिंग, एक्सेसिव belching, nausea after meals and early feelings of fullness, pain eating, pain in the stomach that might sometimes occurs unrelated to meals or may relate with meals. मेन कोज क्या है इसके? व्हाट कोज डिस्पेनिया? ऑफ्टन डॉक्टर्स कैन फाइंड टू कोज ऑफ द इरिटेशन ऑफ स्टमक
stomach ulcer, acid reflux can caused by dyspepsia. If you have reflux stomach acid back up into your esophagus, the tube of landing from your mouth to your stomach. What food can be caused of dyspepsia? Many studies to reported that dyspeptitis symptoms are associated in generation of some foods such as onion, peppers, fatty foods, alcohol, circus fruits and spicy foods. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेग्यूरिगेटेशन. रेग्यूरिगेटेशन होता क्या है? रेग्यूरिगेटेशन इज द स्पिटिंग of food from the esophagus or stomach without nausea and forceful contractions of the abdominal muscles. Ruminations is regurgitation with the apparent physical cause. Ring shaped muscles between the stomach and esophagus normally help prevent regurgitations. What is the cause of regurgitation? Regurgitations happen when digestive fluid and undigested food rise from the esophagus into the mouth. In adults, involuntary regurgitation is the symptoms of conditions such as acid reflux, GERD, and rumination and syndrome. Will occur with the varying degrees of severity of approximately 80% of GERD patients. This symptom is usually described as a short taste in the mouth, true sense of fluid moving up and down in the chest. The third most common symptom is dysphagia. An act of regurgitation such as a casting of incompletely digested food as some birds in feeding their young be the background follow bloods through the defective heart valve. A mitral valve regurgitations, the valve flaps don't close tightly, blood leaks background and the valve enclosed, making it harder for the heart to work properly. Reflexes is normal babies and affects nearly half of all babies on some extent. Is often called positings and regurgitation because you can usually see the milk coming back up after the baby's feed. The medical name of the reflexes. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्पेजिया और ओडिनोफेजिया. पेन ऑन swallowing. Painful swallowings can have cause that are not due to underlying disease. Example include a recent mouth burn, swallowing something too big, having something stuck in the throat or diarrhea. अब हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे. डिफरेंस बिटवीन डिस्पेजिया एंड ओडिनोफेजिया. डिस्पेजिया इज abnormal transit of solids and a liquid, while oligophagia is pain on during swallowings. Dysphagia is not being processed and may cause dehydration, aspiration, nutritional deficiency or airway obstructions. What is cause of ओडिनोफेजिया? ओडिनोफेजिया होता क्या है? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओडिनोफेजिया इंक्लूड ingestion, spill induced esophagitis, radiation injury and infection, esophagitis and cytomegalovirus. This disease dysphagia also may be present but pain in the dominant complaint. What is the difference between dysphagia and dysphagia? Dysphagia was defined as difficulty swallowing any liquid including saliva or solid material. Dysphagia was defined as speech disorder was impairment of power of extensive of speech, writing and sign, and impairment of the power of compressions of spoken or written language. How is ओडिनोफेजाइटिस डायग्नोज करता है? ये ओडिनोफेजाइटिस यूजुअली डायग्नोज विद एंडोस्कोपी. दिस इन्वॉल्व अ स्मॉल लाइटेड camera called an endoscope. It's placed in your throat so your doctor can get a better look at your esophagus. They also have you try the swallowing during the test. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हाइपर सलाइवेशन. हाइपर सलाइवेशन क्या होता है? इन हाइपर सलाइवेशन यूर सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस्ड मोर सलाइवा देन यूजुअल. इफ द एक्स्ट्रा सलाइवा बिगिंस टू एक्यूमुलेट, इफ may begin to drip out of the your mouth unilaterally in older children and adults. Droolings may be a sign of an underlying condition. Hypersalivation may be temporary, the chronic depending on the cause.
ठीक है। हाइपरसलाइवेशन मीन अपना आल्सो नाउ इज हाइपरसलाइवेशन एक्सेसिव ड्रोलिंग लिटरली मीन्स एक्सेसिव सलाइवा फॉलो। कॉज क्या होता है हमारे हाइपरसलाइवेशन के कॉज होता है अपना मॉनिटरिंग सिकनेस, नोजिया, प्रेगनेंसी, साइनस थ्रोट इन्फेक्शन, रेपिटल विनम, false teeth, ulcer, inflammation, pain in the mouth, poor oral hygiene. The best way of stop toppling. Change sleeping position. Share is certain sleeping position may encourage rolling. Treat allergies and sinus problem. Take medication. Receive buttock and injection. Attend speech therapy. Use can oral appliance. Heavy surgery. ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसोफेजाइटिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसोफेजाइटिस। इसोफेजाइटिस होता है क्या? इन्फ्लामेशन दैट डैमेज द ट्यूब रनिंग फ्रॉम द थ्रोट टू स्टमक इसोफेगस कॉज इन इंक्लूड स्टमक एसिड्स बैकिंग अप इनटू द ट्यूब इन्फेक्शन ऑफ मेडिकेशन एंड एलर्जीज requires a medical diagnosis. Esophagitis often cause painful, difficult swelling and chest pain with eating. Emergency symptoms include food stuck in esophagus and chest pain that lasts more than a few minutes. Esophagitis cause of esophagitis include stomach acid backing up in the esophagus, infection, oral medications and allergies. Esophagitis can have serious consequences that affect your quality of life. If left untreated, esophagitis may develop into a condition called esophagus. This may increase your risk of esophageal cancer. Esophagitis symptoms. हम esophagitis के सिम्टम पढ़ेंगे। पेन एरियाज इन द चेस्ट और अपर एब्डोमिनल पेन सर्कुलेशन कैन अकर विथ swallowing, gastrointestinal heartburn, clutching, nausea, regressions of vomiting, throat difficulty swallowing and irritation also and coughing. Difficult swelling, painful swelling, chest pain, heartburn, acid irregulations. That is clinical manifestations of GERD. अब हम पढ़ेंगे असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। एंडोस्कोपी। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में हम पढ़ेंगे बैरियम स्वेलो, द इवोल्यूएट ऑफ डैमेज टू द इसोफेगल म्यूकोसा। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में हम मेजर द रिफ्लेक्स पैटर्न। अब हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ GERD। मेडिकल मैनेजमेंट, हेल्थ एजुकेशन, डाइट, लो फैट डाइट, अवॉइड कैफीन, तंबाकू, बियर, मिल्क, फूड्स कंटेनिंग पिपरमेंट ऑफ स्पेरमेंट एंड कार्बोनेट बेवरेज, अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग टू हॉर्स बिफोर बेड टाइम। मेडिकल मैनेजमेंट में हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। मेंटेन बॉडी वेट, अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स, elevate the head of the bed on 50 to 20 centimeter block, elevate the upper body on pillow. मेडिकल मैनेजमेंट देंगे। मेडिकेशंस में हम एंटासिड देंगे, OH2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, लोरेंजोल, ठीक है, प्रोकिनेटिक एजेंट देंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें देंगे मेडिकल मैनेजमेंट। हम ट्रीटमेंट में देंगे जी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम देंगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अवॉइड फूड टू पिपिटेज इवेंट्स, अवॉइड लाइंग डाउन राइट आफ्टर मील्स, ऑब्टेन आइडियल बॉडी वेट, रिड्यूस एल्कोहल इंटेक, रिड्यूस कैफीन इंटेक, स्मॉलर मैन फ्रिक्वेंटली मील्स, पेशेंट अबाउट द बिंग nature of disease, stress reductions, avoid excretions of binding of full stomach, avoid excreting food, avoid lying down after meals, avoid tight fitting clothes and around the waist, rise head to bed around 10 centimeter, nicotine consumption, obtain ideal body weight.
GRD can usually be controlled with medication, but in medication don't help you with avoid long-term medication use. Your doctor might recommendation the surgeon swab the top of your stomach around the lower esophageal sphincters to tighten the muscles and prevent reflexes. ठीक है. इसमें माइल्ड सिम्टम ऑफ एडिशन ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड GERD इंक्लूड द यूज ऑफ नॉन प्रिस्क्रिप्शन एंटासिड फॉर विटामिन रिसेप्टर एंटासिड एलर्जीज एंटासिड्स ब्रेथ नेम्स thumbs neutralize stomach acid and commonly used for short term relief heartburn and symptoms. ठीक है. द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ GERD प्रोवाइड सिम्टम रिसोल्यूशन एंड हाई रेट्स ऑफ रेमिशंस इन esophagitis, lower the incidence of GERD complication, involve health related quality of life and reduce the cost of disease. ठीक है. इसमें हम अपने पढ़ाई था माइल्ड मोल्ड सीवियर एंड ठीक है. इसमें हम स्टोरेज मेडिकेशन भी सब बता ही चुकी हूँ मैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे अब नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ GERD. नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देंगे ईट अ लो फैट हाई फाइबर डाइट, अवॉइड इरिटेंट्स सच एज स्पाइसी और एसिडिक फूड, एल्कोहल, caffeine and tobacco because they increase gastric acid production. Avoid food or drink to or before bedtime or lying down after eating. Evaluate the head of bed on 6 to 8 box. Lose weight of necessary. Based on the assessment data, the major nursing diagnosis to imbalanced nutrition, less than body requirement related to inability to make enough food because of reflex, acute pain related to irritated esophageal mucosa, imbalanced nutrition, more than body requirements related to eating to dry pain. Intervention of GERD. Lifestyle intervention in GERD have traditionally include avoidance of food then may precipitate reflex episodes and heartburn. Example coffee, alcohol, chocolate, pepperettes, drink, spicy food and behavioral change with weight loss, smoking. Essential head of the bed evaluation avoiding. ठीक है. नर्सिंग डायग्नोसिस नोजिया रिलेटेड टू इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा. ठीक है. सेकेंडरी टू गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज इज पॉसिबल एविडेंसी ऑफ गैंगिंग सेंसेशन orient towards food and verbal reports of nausea. The effective treatment of GERD provides symptom dissociation, high rates and remission in esophagitis, lower than incidence of GERD complication, improve health related quality of life and reduce the cost of disease. Mild symptoms and addition lifestyle change. The initial treatment GERD include the use of non-prescription antacid and himself receptors antagonistic antacids, allergenesis, antacid burns, terms neutralize stomach acid and commonly used for short-term life and heartburn symptoms. Upper gastrointestinal endoscopy and pathology will examines the tissue under a microscope. Doctors may order by GI endoscopy to check for complication of GERD and problems other GERD that may causing your symptoms. Your doctors may be orders on upper GI endoscopy to help diagnosis GERD. A nursing diagnosis is typically three components: the problem and the define, the etiology and the definition of characteristic और risk factor है ना. कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD के हम पढ़ेंगे. एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, इसोफेजाइटिस, इन्फ्लामेशन, इरिटेशन और स्वेलिंग ऑफ इसोफेगस स्ट्रक्चर, नरिंग द इसोफेगस, रेगुलेशन ऑफ एसिड इनटू द लंग्स, साइनेटिस. ठीक है. इसमें अ नर्सिंग डायग्नोसिस डिफाइन नंदा इंटरनेशनल क्लिनिकल जजमेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स हेल्थ कंडीशन लाइफ प्रोसेस एंड vulnerability of the response by the individual family group और कम्युनिटी. जिस नर्सिंग मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे असेसमेंट पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पायरोसिस. तो हम नर्सिंग डायग्नोसिस पे बनाएंगे इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रेटेड इसोफेजियल एक्सपोज टू गैस्ट्रिक एसिड. हम ऑब्जेक्टिव करेंगे पेशेंट नोट टू हैव पायरोसिस फॉर आफ्टर 8 hours. पेशेंट इज एबल टू वर्बलाइज नॉलेज टू नेसेसरी लाइफ स्टाइल चेंज विद 24 hours ऑफ डिस्चार्ज
from the hospital. Invention teach patient to avoid food that cause pain and can increase acid secretions. Evaluation patient has no more pyrosis. Patient now the necessary lifestyle changes. Nursing management the complaint of recurrent हेलो नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें हम पढ़ेंगे पेशेंट कंप्लेंट ऑफ रिगैग्रेटेशंस. पेशेंट शो साइन ऑफ अनकम्फर्टिंग. नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाएंगे इस पे. रिस्क ऑफ एस्पिरेशंस रिकरेंट regurgitations. Objective patient won't show sign of aspiration with the methods intervention. हम teach the patient evaluate the HOB will in bed. It is small frequent meal. Do not eat or drink too hot before and time. Evaluation to more irritations and according to the नर्सिंग मैनेजमेंट में हम फिर से एक और हमने केयर प्लान बनाया. इसमें बनाया है द कंप्लेन ऑफ पेन एट ऑन स्केल्स. इट शो साइन ऑफ अनकम्फर्ट. नर्सिंग डायग्नोसिस एक्यूट पेन आर्टी टिश्यूज एक्सपोज टू गैस्ट्रिक कंटेंट्स. ऑब्जेक्टिव में पेन विल बी रिलीव्ड विद हिम एट हॉर्स. इंटरवेंशन ensure that patient is taking his medication on the. Teach patient to avoid foods then cause pain and or can be increased acid inscriptions. Pain score because out of 10. इसके बाद हमने बनाया है नर्सिंग मैनेजमेंट में है टू वेट लॉस. पेशेंट स्टेट द ही इज़ नॉट ईटिंग सो ही इज़ नो फील पायरोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस में हम बनाएंगे इम्बेलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू डिक्रीज इनटेक. ऑब्जेक्टिव पेशेंट विल अचीव एडिक्वेट कैलोरिक एसिड न्यूट्रिशन इनटेक. इंटरवेंशन एक्सप्लेन द important of adequate nutrition. Teach the patient about the diet which does not cause esophagus irritation. No more weight loss during the daily weighting. Patient receiving an adequate cholesterol diet as followed by dietitians. Summary. GERDs and expense reflexes of occur because of incompetence, lower esophageal sphincters, pyloric extension of motility disorder. Symptoms may include pyrosis, dysphagia, regurgitation. Management starts with health education then medical. Standardized option will Summary. GERD and excessive reflux may occur because of an incomplete lower esophageal sphincters, pyloric stenosis or motility disorder. Symptoms may include pyrosis, dysphagia, regurgitation. Management start with health education then medication and the last option will be the surgical interventions. Nurses play a significant role in providing care of patient with GERD. Reference Burner and the textbook medicals. हमारे इसका समरी का अर्थ यह है गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्सेस डिसीज अकर व्हेन स्टमक एसिड repeatedly flow back into the tube connection your mouth and stomach. This backwash acid reflux and irritation the lining of your esophagus. Many people experience acid reflux from time to time. कंक्लूजन है GERD का गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसीज इज अ कॉमन कंडीशन इन द ऑलरेडी एंड विल बिकम मोर प्रिवेंट एज द पॉपुलेशन एजेस. एल्डरली पेशेंट ऑफ्टन डू नॉट प्रेजेंट विद द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ फीटबर्न एंड एसिड रिगर्गेशन विच कैन daily diagnosis and contribute to the development of complication. Why is GERD important? What is important to treat GERD is lead to narrowing of the esophagus now as strictures, ulcerations of the esophagus, respiratory problems and pancreatitis. Condition of the esophagus now as barrier esophagus. GERD is digestive disorder. It is caused by gastric acid following from your stomach back up into your food pipe. Heartburn is the most common symptoms of GERD. Some lifestyle issues that may cause GERD include being overweight, overeating, heavy caffeine and alcohol, and eating chocolate and spicy food. ठीक, इसके बाद रिफ्लेक्सेस. टूडेज हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा. ओवरव्यू में था हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ GERD, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस टेस्ट, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट. हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ लिया. GERD हमने पढ़ा होता क्या है, पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ा. इसके बाद हमने किसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े. पायरोसिस, डिस्फेजिया, रिग्रेटेशन, डिस्फेजिया, हाइपर सलाइवेशन, इसोफेजाइटिस. इसके बाद असेसमेंट एंड डायग्नोसिस में हमने एंडोस्कोपी, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस फाइंडिंग्स में हमने वेरिएंस लर्विंग क्या था. असेसमेंट एंड डायग्नोसिस फाइंडिंग में एम्बुलेटरी
to 36 hours esophageal pH monitoring, assessment and diagnosis findings, medical management, health education में पढ़ा हमने। हेल्थ एजुकेशन में लो फैट डाइट, अवॉइड कॉफीनेस, तंबाकू, बियर, मिल्क फूड कंटेनिंग अपॉर्चुनिटी, स्प्रिटमेंट एंड कार्बोनेट वगैरह। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने पढ़ा हेल्थ एजुकेशन, मेंटेन बॉडी वेट, अवॉइड 5 प्लेटिंग क्लोथ्स, एलिवेटेड द हेड टू बेड एंड 15 to 20 सेंटीमीटर ब्लॉक्स, एलिवेट द अपर बॉडी टू पिलो। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने पढ़ा एंटासिस और रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में देखा हमने। उसके बाद हमने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने केयर प्लान बनाया। उसके बाद एंड थैंक यू।